So we are going to today study something called relativistic electrodynamics. और उसमें हम the point which we are going to study is magnetism as a relativistic phenomenon. If you remember when we started the class, so in this book there is also a quotation of Einstein that E fields and B fields जो भी हैं, तो we cannot distinguish them because of, for example, अगर कोई भी if the conductor is moving and the field at a given point is produced by the changing magnetic fields, or if electric field is statically changing, still it will have the effects of field at a given point. So due to इसकी जो symmetry की वजह से we are not able to distinguish a field कैसे produce हो सकता है at a given point. एक changing magnetic field से produce होता है या steadily electric field is changing Faraday law उससे produce होता है changing at a given point. So this has something deeper to say in the sense that जो relativity है ना, जो earlier physicists थे, तो electrodynamics can, for example, naturally classical electrodynamics, or let's say classical electrodynamics, उससे कोई contradiction नहीं आता because of this symmetry. The problem came जब हम Galilean relativity को we change it into something called Lorentz factor use किया, ठीक है? So Galilean relativity को when charge moved at higher particles, higher speeds, we got some contradictions. तो इसको दूर करने के लिए what should we do? So either what we are going to say, we are going to इसको हम Galilean relativity कहते हैं, इसको हम न्यूटन मैकेनिक्स कहते हैं, है ना? या तो न्यूटन मैकेनिक्स को हम we are going to couple it with the Lorentz transformation or our modified understanding of time, which is position dependent, and then we can understand this relativistic electrodynamics also. Because as such जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेदर दो रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहे हैं, एक इधर से मूव कर रहा है, सो वेदर ई फील्ड्स आर प्रोड्यूस और बी फील्ड्स आर प्रोड्यूस, कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम बिकॉज वन ऑब्जर्वर में बी एट रेस्ट, अनदर में बी मूविंग, और बोथ में बी मूविंग एट रिलेटिव स्पीड्स. अब जो ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द इंट्रिंसिक सिमेट्रिक नेचर ऑफ द थिंग्स, because we cannot distinguish whether a field at a given point was produced by Faraday's law or Gauss's law of magnetism. ठीक है, changing magnetic flux will produce EMF, है ना, या steady current अगर change हो जाएगी उससे भी EMF produce होता है, ठीक है. So you cannot distinguish the two phenomena. अब क्योंकि दोनों में मोशन आता है ना, चेंज हो रहा है, अब कोई रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है, other two reference frames are moving relative to each other, or one is at rest, they are observing. So we cannot do so. Classical electrodynamics से प्रॉब्लम नहीं आती थी. प्रॉब्लम कहाँ से आती थी? जब people studied Galilean relativity and charge at higher velocities, तो उससे कुछ things could not Newtonian mechanics के साथ प्रॉब्लम आई, ठीक है. अब ये हम we are going to study जो magnetic phenomena है as a case rather than study magnetism जैसा आपके क्लासेस में पढ़ते आए हैं, ठीक है. मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन द चार्ज आर इन मोशन. मगर यहाँ हम मैग्नेटिज्म को एक केस करेंगे एज ए रिलेटिविस्टिक फिनोमेना इंडिपेंडेंटली. गॉट माय पॉइंट? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मैग्नेटिज्म एज ए फिनोमेना कैन इंडिपेंडेंटली अंडरस्टूड एज ए relativistic phenomena. The two reference frames or two charged particles may be moving
इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, उस फेनोमेना को हम वहाँ से निकाल सकते हैं. सो मैग्नेटिज्म एज ए रिलेटिविस्टिक फेनोमेना, दिस इज आवर जॉब इन टुडेज क्लास. ठीक है. सो इन पर्टिकुलर देयर इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल. हम क्या काम करेंगे. दिस बुक है शोन फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट टू डायग्राम्स. एक डायग्राम में ऐसे होगा, दिस इज आप लाइन चार्ज लेंगे यहाँ पर, ये ऊपर वाला जो लाइन चार्ज है इट्स मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज. नीचे वाला चार्ज क्या है? सो एक की वेलोसिटी एक साइड से है, दूसरी की वेलोसिटी वन इज गोइंग इन दिस वे. अब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हमने Q, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. गुड. So in the same way we are going to take another charge, sheet of charge, net charge दूसरी डायरेक्शन में, जहाँ इसको हम ऊपर वाली शीट को नेगेटिव रखेंगे एंड नीचे वाले को पॉजिटिव. ठीक है. And you can have charge here. You can say this is lambda minus, this is lambda plus, this is lambda minus, this is lambda is the charge per unit length property. So you are taking a charge here, so it's being ऊपर इसका दो लाइन्स ऑफ चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर. अब ये है कि समटाइम्स जो वेलोसिटी है ये v है, ये भी v है, और इसकी वेलोसिटी u है, ये जो चार्ज है यहाँ पर बीच में. अब ये इस चार्ज की और इस चार्ज की है ना, मतलब सिंस ये पॉजिटिव नेगेटिव है, नेट चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज भी कैंसिल हो जाए, पॉजिटिव चार्ज भी कैंसिल हो जाए. मगर वंस यू आर इन मोशन, वंस यू आर इन, क्योंकि ये चार्ज यहाँ की तरफ जा रहा है ना, तो जो अपर चार्ज लेयर होगा नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, मगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना. सो देयर विल बी सम, जो मैंने कहा था पिछली बार. सो एट ए गिवन पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है टू साइड्स, इफ आई एम एट रेस्ट, ठीक है, आई कैन मेजर द नॉर्मल लेंथ. ठीक. मगर अगर ये बोर्ड मूव कर रहा है, so मेरे initial and final points will also change depending upon where I am at. If I am at rest, तो मेरा initial तो यहाँ से यहाँ बोर्ड यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, so मेरी initial length and final length is different over measured distance when I was at rest. ठीक है. So in the same way when एक चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, अगर ये चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, but these lines of force, these charges are moving, these line charges are moving this way, तो there will be some shift in the measurement of charge. वो ज़्यादा भी हो सकता है, जिस तरह आप ट्रेन में जाते हैं ना, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन में बैठे तो योर वेलोसिटी विल ऐड. इफ यू आर मूविंग अप इन अपोजिट, योर वेलोसिटी विल ऐड. इन द सेम डायरेक्शन इट विल सबट्रैक्ट, कम हो जाएगी. ऐड अपोजिट में कम हो जाएगी, बिकॉज यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस एग्जाम्पल को लेंगे कि इस चार्ज जो इनसाइड है इट्स ऑल्सो मूविंग. सो रिलेटेड टू दीज टू shifts, तो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ गया. इट विल नॉट एग्जैक्टली कैंसिल. जब आप रेस्ट पे होंगे, दिस विल कैंसिल विद दिस, दिस विल कैंसिल विद दिस, इवन इफ इट विल मूव और इट विल एट रेस्ट, उसका एक वैल्यू आएगा, है ना, बिकॉज चार्ज इज ओनली मूविंग इधर विद दिस और विद दिस. बट अगर ये रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो इट विल नॉट बी, इट विल डिपेंड्स. अब वो हमको क्वांटिटेटिवली निकालना कितना करेगा. ठीक है. सो वी हैव नॉट टू टेक रिकोर्स, यूज द आइडियाज जो हमारे पास लोरेंज फैक्टर के आइडियाज थे. यू विल कम टू द कंक्लूजन whilst we are going to do the exercise that the force which should come out to be is exactly the same as if जो आप earlier class में पढ़ते हैं, magnetic field due to current in a line charge. mu naught I by 2 pi s. We are saying when the charge moves, it produces a magnetic field. Line forces में line charge की वजह से magnetic field at a given point क्या आ रहा है, ठीक है. So we are not assuming magnetism as a phenomenon. हम सिर्फ कहते हैं charges are in motion. But when charges are in motion at velocities and we introduce Lorentz factor, there comes naturally a force. ठीक है. तो
वो फोर्स उतना ही है जितना हम मैग्नेटिज्म से कैलकुलेट करते हैं. So magnetism as a force has not to be studied separately. You can study it as a magnetism as a relativistic phenomenon. Taking this example into consideration and taking the idea of Lorentz force, Lorentz factor into consideration. Our measurement of distance and measurement of time depends upon from where you are measuring. It's not absolute. ठीक है? यहाँ तक ठीक है ना? So कहते हैं उर्दू में तामीर. थोड़ा summarize. Now we are going to do exactly in the sense हम कैसे करेंगे. तो पहले for example current produced in the lambda charge हो गया. एक में lambda b है. Lambda है ना? Lambda क्या है? Charge और ये length. Velocity हो गया. Distance with time. तो कितनी current produced होती है? Depends upon इसमें चार्ज की कितनी वेलोसिटी है. दैट्स लैम्डा v. अब क्योंकि एक में लैम्डा v है प्लस है एक वापस माइनस लैम्डा v है. ये लैम्डा v ये लैम्डा v माइनस ऑफ लैम्डा v ट्वाइस लैम्डा. नेट करंट द हो रहा है these lines of moving in opposite direction. ठीक है. And we are assuming जो u है charge होने वाला है, u is very less than v. In beginning, u जो inside यहाँ पर बीच में charge है, it's less than v. और v और u के दरमियान जो relation है, if you use the relativistic principle, it's this. ठीक है? ये हो गए normal Galilean. This is not a factor. v plus it's relative velocity. But if you use a Galilean factor, you have to use uv. At velocities smaller, if this uv is very small, so you can cancel this factor. This law reduces to the कौन सा law? Galilean law. ठीक है? That's the point. अब जो हमारे पास है, जो करंट है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, अब कह रहा है कि b minus is greater than v plus. माइनस इज ग्रेटर देन v प्लस. ये है ना चार्ज उस साइड जा रहा है. ये चार्ज ऊपर वाला शीट कहाँ से आ रहा है? इट्स गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो क्या व्हाट वी आर सेइंग दैट v माइनस इज ग्रेटर देन v प्लस. v माइनस इज ग्रेटर देन, हाँ है ना. फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं ना, जैसे आप साइकिल पे जा रहे हैं, जब आप देखो या गाड़ी दो गाड़ियाँ जाती हैं, दे आर द सेम वेलोसिटीज. ठीक है? अगर साथ साथ कितना भी वेलोसिटी हो, अगर सेम स्पीड से चल रही तो आपको लग रहा है ये इज ऑफ द सेम वेलोसिटीज. जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, इट सीम्स एज इफ दे आर मूविंग वेरी फास्ट, है ना. तो दे एड अप. दैट्स व्हाई दिस इज, क्योंकि ये चार्ज उधर की तरफ जा रहा है. फॉर दिस इट विल बी, दैट्स व्हाई v माइनस इज ग्रेटर देन v प्लस. From the point of view of this charge, ठीक है? From the point of view of this charge, which is moving in that direction. तो जो हमारा lambda है, if you introduce lambda plus minus is equal to plus minus gamma होता है. अब हमने Lorentz factor को introduce किया. How we can see the charge per unit. ये लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ. ये ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ का मेजरमेंट हमारा क्या है? इट्स रिलेटिव. सो व्हाट वी मेजर बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, इट्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट. इन न्यूटन मैकेनिक्स इट वाज नॉट ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, इट वाज एब्सोल्यूट. सो फॉर एन ऑब्जर्वर व्हिच मूव्स अवे
and for an observer which moves in the same direction. So there will be two measurements of lambda, charge per unit length. Okay, so that is taken into consideration by the factor of gamma, which is less than 1 by root of 1 minus b square by c square. ठीक है, और गामा को अगर हम मतलब मैं लोरेंट्ज फैक्टर डायरेक्ट करूँगा 1 minus b square by c square. So the charge per unit length ये at rest है, तो it depends upon relative velocity v by ये factor गामा factor. ठीक है, where जो lambda naught है its charge per unit length in a rest system. In its own system or its rest system जो भी आप करें, and which is not the same as lambda. Lambda में भी है moving free vis-a-vis lambda naught. और lambda is equal to gamma times lambda naught. और अगर आप गामा प्लस माइनस में करेंगे तो गामा is equal to 1 by root of 1 minus b square. आप जो है आप यहाँ पर लिखिए गामा प्लस माइनस. गामा प्लस माइनस मीन्स either it will be more or it will be less. More हो गया means in the opposite direction, less हो गया means in the same direction. ठीक है, this Lorentz factor. तो इसको हम इंट्रोड्यूस हुआ जो ये है u v को in terms of this factor, the velocity जो हम मेजर करेंगे in terms of u and v. So we are going to see what will come out in terms of this equation. तो जो गामा का फैक्टर है गामा प्लस माइनस है रूट ऑफ 1 minus 1 by c square अपना है ये. तो v के बदले आप क्या लिखोगे, ये v के बदले लिखोगे आप ये v प्लस माइनस और माइनस प्लस u डिवाइडेड बाय 1 plus minus u v by c square का होल स्क्वायर है ना. एक तो ये है 1 minus b square के बदले लिखा है पूरा ये b square है, ये b square. If it will come up ऊपर अगर आएगा तो you can write it like this, you can write it like this 1 plus प्लस माइनस b by c का इसका माइनस. अब इसमें थोड़ा सा अब आप ये है do some amount of simplification in 2 seconds. So डिनोमिनेटर में करेंगे ये ऊपर जाएगा. So you can write it like this. So I straight away write it in the book. You just can simplify it as you please. And further, if you simplify it, I write in the last step, it will come out to be gamma times 1 plus minus u v by c square root of 1 minus u square by c square. अब ये गामा का फैक्टर है, गामा इज दिस लोरेंट्ज फैक्टर. ठीक है, so it may come out to be gamma plus minus. It depends. प्लस और माइनस का फैक्टर ये है, तब आएगा प्लस आएगा इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, माइनस का आएगा इफ वन चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अदर जो लाइन शीट इस डायरेक्शन में जाएगा. और पॉजिटिव के लिए अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा दिस विल बी एट द फैक्टर प्लस, फॉर नेगेटिव इट विल बी माइनस. सो हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ गामा आ रही है फॉर अ गिवन चार्ज, पॉइंट चार्ज व्हिच इज हियर. ठीक है, इस लाइन चार्ज की वजह से गामा का एक वैल्यू आएगा, जो इस चार्ज v प्लस चार्ज पर यूनिट लाइन टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से गामा का एक वैल्यू आएगा, और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इसका एक वैल्यू आएगा. फॉर किसके लिए, फॉर दिस पॉइंट चार्ज वहाँ चार्ज. तो हमारा जो गामा जो लोरेंट्ज फैक्टर है ना उसमें प्लस माइनस आएगा, कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. दिस चार्ज इफ इट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन, if it's moving in this direction तो ज़्यादा आएगा कम आएगा, ज़्यादा आएगा, और इसके लिए कम आएगा because they are moving in the same direction. ठीक है, so we have to incorporate plus minus factor in.
हाँ. So now if you want to see the net total क्या है? लैम्डा टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कितनी बड़ी से लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस. एक तो ये है, ये लैम्डा प्लस है, नीचे वाला शीट ऑफ चार्ज लैम्डा माइनस ऊपर वाला. तो भी नेट तो लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस के लिए हमको गामा प्लस गामा माइनस का फैक्टर दोनों में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो वी कैन यूज इट अगर हम लैम्डा नॉट को अगर सीधे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस में सिर्फ गामा का फैक्टर गामा प्लस का और सो यू विल यूज गामा प्लस माइनस गामा माइनस. ठीक है, गौरव को यहाँ पर समझा है. So what I said, lambda plus ये positive sheet line of charge है, negative line of charge है. और so it will so अगर हम गामा फैक्टर को बाहर निकालेंगे it will be उनका क्या प्लस है. अब गामा प्लस गामा माइनस का आप पता है गामा प्लस गामा माइनस हमारा किसके बराबर है? ये इसके बराबर है ना. अब यहाँ काम हम करेंगे गामा प्लस के बाद यहाँ एक फैक्टर प्लस रखेंगे. ठीक है, we are going to write like this: lambda naught is equal to 1 plus v by c square root of 1 minus e square by c square. और गामा माइनस में ये माइनस है, माइनस 1 minus v by c square root of 1 minus v by c square. ठीक है, and if you just simplify ये आएगा ना, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2u v by c square आएगा. So it will be, if you see it will come out to be twice lambda u v by c square, u v by c square root of 1 minus u square by c square. तो एक्चुअली यहाँ आएगा 2 लैम्डा u v by c square, बट यहाँ स्टार्ट में था ना हमने लैम्डा u v is equal to this, the current is equal to this. ये आएगा 1 और 1 कैंसिल आएगा, ये twice u v by c square आएगा. c square ये है 2u v है, आपने ठीक है लैम्डा को हाँ this is fine यहाँ पे. ठीक है, so this is so conclusion क्या है? As a result of unequal Lorentz contraction, the positive and negative line, the current carrying wise electric neutral one inertial system will be charged in the. अगर current carrying wire that's electrically neutral in one inertial system may be charged in the another system. अगर एक inertial system के हिसाब से neutral है, दूसरे में ये, so this point will make it more clear by specifically, for example, जो लैम्डा लाइन चार्ज लैम्डा टोटल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ज है जो आपने पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन चार्ज है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और है ना वो आप करते हैं कि करंट मूव्स है इलेक्ट्रिकली चार्ज लाइन बाय गॉसेस लॉ या बाय इट्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, वो कैसे लिखते हैं? सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके बराबर आएगा? F इज इक्वल टू QE. ठीक है, एंड QE के बदले अगर आप लिखोगे ये लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट S और Q के बदले क्या लिखोगे आप? F is equal to Q को in terms of lambda लिखिए, Q को in terms of lambda लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये lambda है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये उस साइड जाएगा लैम्डा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है,
चार्ज पर यूनिट लेंथ तो बाकी आएगा उस साइड. So you can write it like this in terms of lambda v by pi epsilon naught c square s. Equal to I q u divided by e root of 1 minus u square by c square. So we have done nothing. हमने जो 4 चार्ज का वैल्यू है इसको जो लैम्डा टोटल है ये चार्ज पर यूनिट लेंगे क्या लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंगे we just use distribution and dissipation and substitute it here. तो the force हमारा ये है this much. अब हम एक काम करेंगे जो हम करते आएंगे. So we are taking one reference frame which is x, दूसरा perpendicularly move कर रहे हैं. ठीक है इन दैट डायरेक्शन. तो जो फोर्स बिटवीन टू रेफरेंस फ्रेम्स क्या है प्रीवियस बार हमने लिखा था F परपेंडिकुलर इक्वल टू गामा टाइम्स F परपेंडिकुलर, और पैरेलल डायरेक्शन में अगर सेम होगा तो F पैरेलल विल बी द सेम एज इट. सो इफ a particle is moving perpendicularly you have to introduce the factor of gamma into consideration. ठीक है इस तरह आप करते थे फ्लोरेंस फैक्टर उसी में एक डायरेक्शन में अदर में सप्रेस्ड इन द सेंस कि उन डायरेक्ट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं मेजर करते. तो अब फोर्स को अगर इन टर्म्स ऑफ दिस लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू F इज इक्वल टू गामा के बदले क्या लिखेंगे गामा के बदले आप लिखोगे 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर F बार. ठीक है अब देखो F को अगर इन टर्म्स ऑफ F बार देखेंगे यहाँ पर एक F इसमें सब्स्टिट्यूट करो ये अपना व्हाट वी हैव गॉट हियर. ठीक है तो सो व्हाट विल यहाँ ये 1 माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ एंड व्हाट नेट फोर्स जो हमारे पास आएगा सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन q u by s. ठीक है अब the charge attacked was divided by 4 that's purely electric. अब देखो यहाँ पर c स्क्वायर है c स्क्वायर किसके बराबर है ये है 1 by रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन है ना है कि नहीं. रूट के बराबर नहीं है. हाँ ठीक है. नाउ वी सब्स्टिट्यूट c स्क्वायर हियर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो लैम्डा v बाय पाई एप्सिलॉन के बदले आप लिखो एप्सिलॉन अपना यही है c स्क्वायर के बदले आप लिखो 1 बाय म्यू नॉट c स्क्वायर अगर है तो कैंसिल कर दो. देखो आप इंटरेस्टिंग थिंग एप्सिलॉन कट जाता है एप्सिलॉन के साथ यहाँ से म्यू नॉट रहता है. ठीक है एंड q u by s. सो व्हाट विल इट्स जो फोर्स नेट फोर्स हमारा आता है इट विल बी q u लैम्डा v by s. ये जो स्टार्ट में मिलता है लैम्डा v माइनस लैम्डा v लैम्डा ट्वाइस लैम्डा v आएगा. सो ये तो इट विल कम आउट टू बी q u टाइम्स म्यू नॉट I